Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I am Nitika. Let's check the pulse of the stock market. Today, let me first discuss some important update about Nifty 50 and then I will discuss as usual the Nifty 50, Nifty Bank level for the next week. So, to know the level for the Nifty, stay connected till then and smash the like button now. And yes, subscribe the channel also for these kind of regular update. So let's start with the update in Nifty 50, which is actually Nifty 50 may one more stock is added. Yes, why? Actually, we all know that Reliance का अभी डीमर्जर हुआ है, तो रिलायंस से जो उसकी एक सब्सिडरी कंपनी रिलायंस इज होल्डिंग कंपनी, तो वन सब्सिडरी कंपनी विच इज JFSL मीन्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अलग हो चुकी है। तो वो उसका जो एक वो उसी वही कंपनी ऐड हुई है, जो कि 51 स्टॉक हो गए हैं अब निफ्टी 50 में, तो जो कि अर्लियर इट वाज 50 स्टॉक in Nifty 50. Now it has become 51 stock in Nifty 50, जो कि रिलायंस से अलग होके लिस्टेड होने वाली है इन स्टॉक इन NSE. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट अपडेट इन निफ्टी 50. तो अभी 51 स्टॉक है निफ्टी 50 में रिलायंस से JFSL का डीमर्जर होने के बाद. रिलायंस की इस डीमर्जर की स्टोरी आई विल शेयर इन अनदर वीडियो विद द रिलायंस बाइंग लेवल. And now let's come to the chart of Nifty 50. What is happening there? तो निफ्टी 50 ने तो बिल्कुल हाई पे हाई. इवन माय लास्ट वीडियो I have actually discussed the breakout in Nifty 50. I will give that video link in I button. You can check the video. There I have given the level where it has actually this was ये level था. It has broken this level and given the breakout, and उसके बाद से you can see ये ऊपर का ऊपर बस हाई पे हाई लगाता जाता है. इवन इट हैज टच द 20,000 ऑलमोस्ट 20,000 इसने टच कर दिया था, मतलब 19,997 का समथिंग. सो कहीं पे भी ये रुक नहीं रहा है, बस भागता ही जा रहा. बट आफ्टर दैट 20,000 चेक करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, इट हैज स्टार्टेड फॉलिंग डाउन ऑन फ्राइडे. तो फ्राइडे इसने थोड़ा सा नीचे आया एंड इट हैज टेकन अ सपोर्ट फ्रॉम 19,700. यस, 19,700 पे इट हैज टेकन वन सपोर्ट विच इज एक्चुअली वेरी good and strong support since last week. So Nifty 50 is continuously going up and up, and I can see if ऐसे ही चलता रहा तो we will very soon we can see the 21,000 on the chart. Yes, but हाँ, ये नहीं कि एक साथ ही रुक रुक के स्लो होके थोड़ा ब्रेक लेके ये ज़रूर 21,000 तक जा सकता है. आई कैन ओनली प्रेडिक्ट, आई कैन नॉट एश्योर यू. बट हाँ, अभी तक निफ्टी 50 इज शोइंग गुड स्ट्रेंथ. लास्ट फ्राइडे कुछ थोड़ा सा डाउन हुआ, उसका भी रीज़न था विच वॉज एक्चुअली इन्फोसिस के रिजल्ट is not that good. Because of that, Infosys is actually valuable stock in Nifty 50. So it has dragged it down. तो इस वजह से वो थोड़ा सा इन्फोसिस ही उसको नीचे लेके थोड़ा सा निफ्टी को आया. बट स्टिल निफ्टी is holding this support. I'm sure it should not break it. If it's breaking it also, it will go to directly, it will go to 19,000 this 500 level. Yes, this is actually ये level है 19,500 का, but only after breaking 19,700. Nifty 50 level for next week can be 19,700 to 20,000. If it's breaking upper level, it can go to 20,300, and if it's breaking lower level, means 19,700, then it can reach to 19,500. सो दिस टाइम आई हैव गिवन 4 लेवल. थोड़ा ऊपर के लेवल में भी एक लेवल है और नीचे के लेवल पे
भी है, but 19,700 to 20,000 is a important range, important range for the Nifty 50 for next week. So please study this level very nicely for next week. Now we'll go to the Nifty Bank chart. So now we have come to the Nifty Bank chart. We can see what is happening in the chart. Nifty Bank was also very positive. यहाँ से उसने एक resistance लिया which was 45,006 means 700 बोल सकते हैं. तो 45,700 के आसपास it has taken a resistance and from there it was continuously falling. But at 20 EMA it has, this is 20 EMA green line, and it has taken a support, very good support here, which was actually 44,500 near about. Yes, 44,500 के आसपास एक सपोर्ट लेने के बाद में अगेन it started taking good move towards upside. So उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया 45,750 के आसपास, एंड देन अगेन इट वाज गोइंग अप एंड अप. बट यहाँ पे आके इसने 46,400 का इसने हाई लगाया, विच इज एक्चुअली ऑल टाइम हाई. यस, फॉर द निफ्टी बैंक इट इज ऑल टाइम हाई. इवन फॉर द निफ्टी ऑल्सो 20,000 इज ऑल टाइम हाई. सो निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई लगा के 46,369.70 के आसपास वो ऑल टाइम करने के बाद थोड़ा सा उसमें एक प्रेशर आया था, दिस प्रेशर एक्चुअली. सो अभी इसका एक ही रेजिस्टेंस मुझे 46,400 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है. और सपोर्ट के लेवल पे पहला सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट कैन बी विच इज़ वेरी एक्चुअली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लुकिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विच इज़ 45,700. मीन्स 45,700 से 46,400 एक अच्छा गुड रेंज है, विच इज़ गुड रेंज फॉर निफ्टी बैंक फॉर नेक्स्ट वीक ओनली. एंड इसमें भी मैं एक दो लेवल दे रही हूँ. अगर ये नीचे के लेवल पे इसको तोड़ देता है, सो बिकॉज इट इज़ वीकली review, weekly prediction. So if it's breaking between, it is breaking 45,700, then it will definitely go to the 45,300. तो 45,300 नीचे का लेवल है, वो तभी आएगा जब ये 45,700 को तोड़ेगा. सो Nifty bank trading range for next week can be 45,700 to 46,400. But at the downside, if it's breaking 45,700, it will go to 45,300. So these are the level for Nifty 50, 19,700 to 20,000, and for Nifty Bank 45,700 to 46,400. So for this kind of regular update, please like and share the video and subscribe the channel. Signing off.